हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्पायरिंग एजुकेशन प्लस। आज हम और एक बहुत ही सिंपल ट्रिक सीखेंगे। कोई भी 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन को 111 यानी कि 111 के साथ करना है सिर्फ 3 सेकेंड्स में। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव राइट डाउन द क्वेश्चंस। 47 into 11। अब जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, दिस इज द 3 डिजिट नंबर, so we have to make first this 3 digit, it will be at 0. Now we have to do write 0 in first place. ये दोनों को प्लस करना है, it will become a 4. ये तीनों को प्लस करना है जो कि होता है 11. अब 3 डिजिट है नहीं तो हमें यहाँ के 2 डिजिट्स लेना है. 4 plus 7 is again 11 and last will be 7. अब इसे सिंपल फॉर्म में लिख देना है. एज वी ऑल नो, एक प्लेस पे एक ही डिजिट रहता है 1. ये 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा यहाँ पर. इट विल एड टू 1 plus 4 will be 5, 0 as it is. As simple as this. Now next sum. It will be 32. Add 0. So 0, 3, 5, 5, 2. 43 into 111. It will add up to 0, 4, 7, 7, 3. 52. 0, 5, 7, 7, 2. This is our answer. Next will be 62. Add 0, 0, 6, 8, 8, 2. 54, 0, 5, 9, 9, 4. See how simple it is. Now this is the tricky one. It will be become addition. First add 0, 0, 5. 9 plus 5 will be 14. Again 14 and then 9. So 9, 4, 5, 6, 0. 72. Add 0, 7, 9, 9, 2. Last will be 098 into 111. So first we will write 0. 0 plus 9 will be 2. 0 plus 9 plus 8 will be 17. Again 9 plus 8 will be 17 and last will be 8. Always remember, keep this balancing line. This will help you a lot. 8, 7, 8 and 10. See how simple it is.